This session is being recorded, and in today's session, we are discussing part one and part two. और अक्सर स्टूडेंट्स का सवाल होता है कि सर पार्ट वन में कभी किसी ने ये नहीं कहा वैसे कि पार्ट वन बहुत मुश्किल है, लेकिन कभी कभार पार्ट वन के अंदर भी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स आती है। और जो वो प्रॉब्लम्स है वो बेसिकली उसके एक्सेंट पर आती है। कभी कभार वो बहुत तेज बोल रहा होता है, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो अगर आप फोकस करें तो आप जवाब को पकड़ सकते हैं। अच्छा, वो बातें वही है जो मैं अक्सर रीडिंग में आपको लोगों को गाइड करता हूं। जैसे आपने इन आ बोलेगा, वो आ डैश इज रिक्वायर्ड, जो भी यहां पर चीज आएगी वो समथिंग में होगी। इंस्ट्रक्टर्स वेयर डैश शर्ट्स, कौन सी शर्ट्स? रेड शर्ट्स, ब्लू शर्ट्स, ऑरेंज शर्ट्स, हो सकता है शर्ट का कलर हो, फॉर्मल शर्ट्स, व्हाइट शर्ट्स, कलर आ सकता है। द साइज ऑफ द क्लासेस इज लिमिटेड, देर आर क्वाइट टाइम्स ड्यूरिंग द मॉर्निंग फॉर अ डैश और अ गेम। फॉर आ, ये मिल जाएगा आपको, आ मिलेगा। इफ देयर इज, क्लासेस आर हेल्ड इफ देयर इज, इफ देयर इज व्हाट, इज मिलेगा इफ देयर इज। अ चेंज ऑफ क्लॉथिंग, ये वाला वर्ड आपको सुनने को मिलेगा। अब यहां क्या आएगा? अ चेंज ऑफ क्लॉथिंग आ। अब यहां लिखा है चार्लीज, चार्लीज का क्या? चार्ली शुड अराइव एट 9:20 AM ऑन द फर्स्ट डे बिफोर द क्लास, हिज डैश विल बी चेक्ड। क्या इसका चेक क्या किया जाएगा? इसका यूनिफॉर्म चेक किया जाएगा, इसका इसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट चेक की जाएगी। क्या इसका चेक किया जाएगा? विल बी चेक्ड। ही शुड देन गो टू द डैश टू मीट हिज इंस्ट्रक्टर। फिर उसको, अब देखिए, ही शुड देन शुड गो टू द, ऑब्वियसली यहाँ पर कोई लोकेशन है, और उसके बाद फिर ये कोई आपको अमाउंट बताना है। तो अक्सर पार्ट, जब भी हम पार्ट वन की बात करते हैं तो पार्ट वन में लोकेशंस होती है, कोई एड्रेस होता है, कोई अमाउंट होता है, कोई टाइम होता है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। अब देखते हैं इसको किस तरह से ये चल रहा है। From someone who's seen them work with one of the shirts. He'd be best if. Hello, Junior Cycle Camp. Jake speaking. Hi, I'm calling for some information about the cycle camp. I'm thinking of sending my son. Great. Well, it's held every weekday morning over the summer vacation, and we focus on basic cycling skills and safety. We have 8 levels for children from 3 years upward. How old's your son? Charlie, he's 7. He can ride a bike, but he needs a little more training before he's safe to go on the road. He'd probably be best in level 5. They start off practicing on the site here, and we aim to get them riding on the road. But first, they're taken to ride in the park, away from the traffic. Right. And can you tell me a bit about the instructors? Well, First of all children at this level are taken to practice in a, very good. Here, and we aim to get them riding on the road. But first, they're taken to ride in the park. आपसे मैंने कहा था ना कि आपको इन आ मिलेगा, तो आपने इन आ को पकड़ के रखना है। अच्छा देखो, हर पार्ट का एक अलग स्टाइल होता है। पार्ट वन में जो मैं गाइड कर रहा हूँ उसको जहन में रखना कि सर ने कहा कि इसको पकड़ के रखो, तो आपने पकड़ के रखना है। ठीक है ना? चले। Away from the traffic. Right. Can you tell me a bit about the instructors? Well, all our staff wear different colored shirts. So we have 3 supervisors, and they have red shirts. They support the instructors, and they also stand in for me if I'm not around.
Then the instructors themselves are in blue shirts, and one of these is responsible for each class. ठीक है, बहुत आसानी से मिल गया आपको, बहुत आसानी से मिल गया ब्लू शर्ट. Okay. In order to be accepted, all our instructors have to submit a reference from someone who's seen them work with children. Yes, a dash is required and training is given. क्या चाहिए इंस्ट्रक्टर से, लोगों को क्या चाहिए होता है? Exactly. A reference is required and training is given. Like if they worked as a babysitter, for example. Then they have to complete our training course, including how to do lesson plans and generally care for the well-being of the kids in their class. They do a great job, I have to say. Right. And tell me a bit about the classes. What size will Charlie's class be? We have a limit of 8 children in each class, so their instructor really gets to know them well. They're out riding most of the time, but they have quiet times too, where their instructor might tell them a story that's got something to do with cycling, or get them to play a game together. हाँ भाई, बहुत तमीज से बोल रहा है ये, बहुत आसानी से समझ आ रही है कि वो स्टोरी फॉर अ स्टोरी और अ गेम. It's a lot of fun. नहीं बेटा, स्टोरी. अब्दुल्ला दोबारा सुनो. Too, where their instructor might tell them a story that's got something to do with cycling, or get them to play a game together. It's a lot of fun. It must be. Now, what happens if there's rain? Do the classes still run? Oh, yes. Classes are held if there is. अब देखें, ये दोनों सवाल उसने पूछा, कंडीशनल सेंटेंस है, तो यहां पे भी कंडीशनल लिखा हुआ है. दोबारा सुनिएगा. It's a lot of fun. It must be. Now, what happens if there's rain? Do the classes still run? Oh, yes. Classes are held if there is rain. Number 3 का a dash is required. Reference, a reference is required. अच्छा जी, आगे चलिए. We don't let that put us off. We just put on our waterproofs and keep cycling. Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 6 to 10. अब क्या क्या चीजें लेकर आनी है? A change of clothing, a dash, shoes, not sandals, Charlie's dash. Or before the class, his dash will be checked. He should then go to the dash to meet his class instructor. The course cost dash per week. Now listen carefully. Now listen and answer questions 6 to 10. And is there anything special Charlie should bring along with him? Well, maybe some spare clothes, especially if the weather's not so good. And a snack for break time? How about a drink? No, we'll provide that. And make sure he has shoes, not sandals. Sure. And just at present, Charlie has to take medication every few hours, so I'll make sure he has that. Absolutely. Just give us details of when he has to take it, and we'll make sure he does. Thanks. अच्छा, Charlie's medicines बोला या medication बोला? Medication every few hours, so I'll make sure. And make sure he has shoes, not sandals. Sure. And just at present, Charlie has to take medication every few hours, so I'll make sure he has that. Absolutely.
Just give us details of when he has to take it, and we'll make sure he does. Thanks. Now, नंबर 6 का क्या लिखा, लंच आएगा या स्नैक आएगा? स्नैक. now, there are a few things you should know about day one of the camp. The classes normally start at 9:30 every morning, but on day one, you should aim to get Charlie here by 9:20. The finishing time will be 12:30 as usual. We need the additional time because there are a few extra things to do. The most important is that we have a very careful check to make sure that every child's helmet fits properly. If it doesn't fit, we'll try to adjust it. Or क्या चीज चेक करेंगे? मुझे तो लग रहा था ब्लड प्रेशर चेक करेंगे उसका, तो बाद में पता चला हेलमेट. हेलमेट. we'll find him another one. But he must wear it all the time he's on the bike. Of course. Then, after that, all the instructors will be waiting to meet their classes, and they'll meet up in the tent. You can't miss it. And each instructor will take their class away and get started. कहाँ मिलेंगे ये लोग? कैंट में मिलेंगे. कैंट में मिलेंगे या टेंट में मिलेंगे? अब जरा सुनिएगा दोबारा, कहाँ मुलाकात हो रही है, कैंट में या टेंट में? We'll find him another one. But he must wear it all the time he's on the bike. Of course. Then, after that, all the instructors will be waiting to meet their classes, and they'll meet up in the tent. You can't miss it. And each instructor will take their class away and get started. Okay. Well, that all sounds good. Now, can you tell me how much the camp costs a week? $199. We've managed to keep the price more or less the same as last year. It was $190 then, but the places are filling up quite quickly. Right. Okay. Well, I'd like to book for the... हाँ भाई. अच्छा, कैंट था, टेंट था, कैंप था. टेंट, कैंप, क्या था? किसी ने लिखा कैंट, कैंट एरिया, किसी ने लिखा टेंट. अब आप मुझे खुद बताओ, ही शुड गो देन टू द कैंप. उसे कैंप में जाएगा, वो टेंट में जाएगा, या कहीं और जाएगा? किसी ने कैंप लिख दिया, कैंप भेज दिया, ठीक है ना? तो उसे जाना था टेंट में. 199 हेलमेट, मेडिकेशन, स्टोरी, रेफरेंस, ब्लू और पार्ट. चले, अब आपका एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं. 7 से 8 मिनट का टेस्ट होगा. बिल्कुल ऐसे ही अपने 1 से लेके 10 तक नंबर अपने पास लिख लीजिए. थोड़ा सा मैं आपको गाइड कर देता हूँ. अब आप देखें, आपके पास लिखा है अवेलेबल फॉर वीक बिगिनिंग डैश में. अब ऑब्वियसली देखो, यहाँ पर कोई ना कोई डेट लिखनी होती है, ठीक है ना? डैश में आपको डेट लिखनी है. उसके बाद आपसे कहता है, देखो, फिर उसके बाद आपको कोई प्राइस लिखनी है, फिर कॉटेज का नाम लिखना है, फिर उसके बाद बिल्डिंग वाज ओरिजिनली क्या थी, वो हकीकत में क्या थी उसको बताना है आपको. और ओरिजिनली वॉक थ्रू डोर्स फ्रॉम लिविंग इनटू आ का वर्ड आपको मिल जाएगा. सेवरल डैश स्पेसेस एट द फ्रंट. सेवरल की जगह कोई और वर्ड इस्तेमाल करेगा, मैनी का वर्ड इस्तेमाल करेगा, लेकिन सेवरल नहीं बोलेगा. याद रखना, याद रखना, सेवरल नहीं बोलेगा. तुम्हें स्पेसेस एट द फ्रंट, तो तुम्हें इस बात का ख्याल रखना है कि बेडरूम हैज अ शार, इससे पहले पहले वो बोल के निकल जाएगा. फिर जैसे ही वो शार पर है, सेंट्रल हीटिंग एंड स्टोव दैट बर्न्स व्हाट, व्यू ऑफ ओल्ड डैश फ्रॉम लिविंग रूम. व्यू ऑफ ओल्ड, क्या, किस चीज का नजारा दिख रहा है? व्यू ऑफ हिल टॉप डैश फ्रॉम द बेडरूम. बेडरूम से किसके नजारे हो रहे हैं, लिविंग रूम से किसके नजारे हो रहे हैं. और आखिर के अंदर, और आखिर में देखिए लिखा हुआ है डेडलाइन फॉर द फाइनल पेमेंट एंड ऑफ डैश. एंड ऑफ व्हाट? एंड ऑफ मई, एंड ऑफ जून, एंड ऑफ जुलाई,
एंड ऑफ द वीक क्या, ठीक है। वही बातें आपसे दोबारा पूछ रहा है वो, जो अक्सर आप लोग बार बार रिपीट होती है। जैसे उसने डेट पूछ ली, उसने आपसे कॉस्ट पूछ ली, उसने किसी चीज का प्रॉपर नाउन का नाम पूछ लिया, और कोई लोकेशन बताई जा रही है आप, और जनरली कुछ व्यूज बताए जा रहे हैं। देखिए, लेट्स स्टार्ट। आपके पास टोटल 7 मिनट है। Wife Shirley, and we own the... Answer questions 1 to 6. Hello? Oh, hello. I was hoping to speak to Jack Fitzgerald about renting a cottage. I'm his wife Shirley, and we own the cottages together, so I'm sure I can help you. Great. My name's Tom. Some friends of ours rented Granary Cottage from you last year, and they thought it was great. So my wife and I are hoping to come in May for a week. What date did you have in mind? The week beginning the 14th, if possible. I'll just check. I'm sorry, Tom, it's already booked that week. It's free the week beginning the 28th, though, for 7 nights. In fact, that's the only time you could have it in May. Oh, well, we could manage that, I think. We'd just need to change a couple of things. How much would it cost? That's the beginning of high season, so it'd be £550 for the week. Ah, that's a bit more than we wanted to pay, I'm afraid. We've budgeted up to £500 for accommodation. Well, we've just finished converting another building into a cottage, which we're calling Cherville Cottage. Sorry, what was that again? Cherville. C-H-E-R-V for Victor, I-L. Oh, that's a herb, isn't it? That's right. It grows fairly wild around here. You could have that for the week you want for £480. Okay, so could you tell me something about it, please? Of course. The building was built as a garage. It's a little smaller than Granary Cottage. So that must sleep 2 people as well. That's right. There's a double bedroom. Does it have a garden? Yes, you get to it from the living room through French doors. And we provide 2 deck chairs. We hope to build a patio in the near future, but I wouldn't like to guarantee it'll be finished by May. Okay. The front door opens onto the old farmyard, and parking isn't a problem. There's plenty of room at the front for that. There are some trees and potted plants there. Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 7 to 10. Now listen and answer questions 7 to 10. What about facilities in the cottage? It has standard things like a cooker and fridge, I presume. In the kitchen area, there's a fridge freezer, and we've just put in an electric cooker. Is there a washing machine? Yes, there's also a TV in the living room, which plays DVDs too. The bathroom is too small for a bath, so there's a shower instead. I think a lot of people prefer that nowadays anyway. It's more environmentally friendly, isn't it? Unless you spend half the day in it. Exactly. What about heating? It sometimes gets quite cool at that time of year. There's central heating, and if you want to light a fire, there's a stove. We can provide all the wood you need for it. It smells so much nicer than coal, and it makes the room very cozy. We've got one in our own house. That sounds very pleasant. Perhaps we should come in the winter to make the most of it. Yeah, we find we don't want to go out when we've got the fire burning. There are some attractive views from the cottage, which I haven't mentioned.
There's a famous stone bridge. It's one of the oldest in the region, and you can see it from the living room. It isn't far away. The bedroom window looks in the opposite direction and has a lovely view of the hills and the monument at the top. Well, that all sounds perfect. I'd like to book it, please. Would you want a deposit? Yes, we ask for 30% to secure your booking. So that'll be £144. And when would you like the rest of the money? You're coming in May, so the last day of March, please. Fine. Excellent. Could I just take your details so that I... That is the end of part 1. You now have half a minute to check your answers to part 1. हाँ भाई, कितने मार्क्स आए? स्कोर बताइए। नाइन 9, 8, 9। ये 1, 2, 8 क्या लिखा है? 3 मार्क्स नहीं भाई, बेटा आपको सर्जरी की जरूरत है। नाइन 8 बेटा 10 आने चाहिए। 10। अच्छा, अब देखिए कहां पर पता है गलती कहाँ हुई होगी, मैं बताऊं। मॉन्यूमेंट, ये वाला गलत हुआ होगा। आपकी गलती हुई होगी वुड। मानते हैं? क्योंकि ये जो वर्ड्स हैं इसमें वाउल साउंड ज्यादा आ रही है। जिसमें वाउल साउंड ज्यादा आएगी, खार, वो गार्डन भी ऐसे बोलेगा कि आपको समझ नहीं आएगा। वुड भी वुड, क्योंकि वुड असल में देखो ये वर्ड इसने जो बोला वुड, अब WOULD भी वुड है, WOOD भी वुड है। फिर मॉन्यूमेंट में स्पेलिंग हमारा बच्चे को नहीं आती, समझ आ गया होगा मॉन्यूमेंट स्पेलिंग गलत हो गई होगी। कितने लोगों की स्पेलिंग गलत हुई है? लिखकर भेजे माइंड। कितने लोगों की स्पेलिंग में मिस्टेक्स आई? स्पेलिंग्स, आप लोगों ने गैराज की स्पेलिंग गैरेज, गैराज स्पेलिंग, ठीक है। बाकी और कोई स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं आया, लेकिन हो सकता है आपने गैराज की स्पेलिंग गलत लिखी हो। चले, ठीक है। अब्दुल्लाज आईफोन, बेटा क्लास के बाद सर से राब्ता कीजिएगा, ठीक है। अब हम जा रहे हैं पार्ट 2 को भी जरा आज देखते हैं। पार्ट 2, ये आपने बुक 16 कर रहे थे, हम 16 में पार्ट 2 ले आते हैं। अच्छा भाई, अब देखिए यहां पर क्या है। यहां पर आपसे कह रहा है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। या तो मैप आता है या फिर इसी तरह की एक इंफॉर्मेशन होती है जो आपको सुननी होती है, और ये वाले वर्ड्स नहीं बोलता। बोलता नहीं बोलता, ये नहीं बोलता, ये वाले वर्ड्स बोलेगा, ये बोलेगा, और ये वाले वर्ड्स नहीं बोलेगा। इसके ऑपोजिट्स बोल रहा होता है। According to Dash, what are the two main advantage of working in agriculture and Dash sectors? Which two of the following are likely to be disadvantage for people working outdoors? आपको यहाँ पर disadvantages बताने। मैंने हमेशा समझाया कि जब पार्ट 2 कर रहे हुआ करें
तो पार्ट 2 में नोट टेकिंग की आदत डालें। ये जो 4 जवाबात है ना, ये नोट्स अपने पास थोड़े से लिखते रहा करें। डिसएडवांटेजेस को नोट करना है अपने पास, ठीक है। ट्राई करें ये वाली मेरी टेक्निक, नोट टेकिंग। हाथ में पेंसिल रखें और सिर्फ एडवांटेजेस को लिखें, डिसएडवांटेजेस को लिखें। और जब आप लिख रहे हो तो अपनी नजरों को फिर उस वक्त इन वर्ड्स पर लेकर आइएगा कि इसमें कौन से एडवांटेजेस की बात कर रहे हैं जो एग्रीकल्चर एंड डैश सेक्टर में वो आपको दे रहा है, ठीक है ना। चले। Now listen carefully and answer questions 11 to 14. Hello, everyone. My name is Megan Baker, and I'm a recruitment consultant at AVT Recruitment Specialist. Now, our company specialises in positions that involve working in the agriculture and horticulture sectors. So that's fresh food production, garden and park maintenance, and so on. And these sectors do provide some very special career opportunities. For a start, they often offer opportunities for those who don't want to be stuck with a 40-hour week, but need to juggle work with other responsibilities, such as childcare. And this is very important for many of our recruits. Some people like working in a rural setting, surrounded by plants and trees instead of buildings, although we can't guarantee that. But there are certainly health benefits, especially in jobs where you're not sitting all day looking at a screen, a big plus for many people. Salaries can sometimes be good too, although there's a lot of variety here. And you may have the opportunity in some types of jobs to travel overseas, although that obviously depends on the job, and not everyone is keen to do it. Of course, working outdoors does have its challenges. अच्छा, मैंने आपको एक टेक्निक अप्लाई कर रहा था। मैं यकीन करें, मैंने जवाबात नहीं देख रहा था, मैं अपने मोबाइल में देख रहा था और इसको सुन रहा था। मेरी टेक्निक फॉलो कीजिएगा। और जब मैं इसकी टेक्निक, मैंने सिर्फ इसकी बातों को सुना, और अभी तक मैंने आपसे, मैं अभी बात कर रहा हूँ और अभी भी मैं मोबाइल में लगा हुआ हूँ, मैंने जवाबात को, सिर्फ इसकी बातें मेरे दिमाग में घूम रही हैं कि इसने क्या कहा। मेरा हाफजा आपसे ज्यादा अच्छा है। और मैंने जो है, अब मैं अपने आंसर्स मार्क करने जा रहा हूं कि मैंने जो सुना कि इसने कौन से एडवांटेजेस बताए। मैंने अभी भी अपनी बातों को नहीं, इनकी बातों को मैं सिर्फ सुन रहा हूं। अब मैं देखें, जो मुझे याद है, उसने कहा कि वो लोग जो एक जगह पर काम नहीं करना चाहते और थोड़ा हट के काम करना चाहते हैं, इधर उधर जाना चाहते हैं, यानी कि वो जो उनको थोड़ा सा एक्टिव रहकर काम करना अच्छा लगता है, ठीक है ना। और एक आपको हर ऑफ 4 दीवारी में नहीं बैठना, आप घर से काम करना चाहें घर से काम कर लें जब आपका दिल चाहे, तो ये भी मैंने सुना एडवांटेज। अब और एक बात, द अपॉर्चुनिटीज फॉर ओवरसीज ट्रेवल, ये वाली बात भी मैंने सुनी। लेकिन सबसे ज्यादा क्लोज कौन सी है? फ्लेक्सिबल वर्किंग अपॉर्चुनिटीज। लेकिन सर, हमें तो डी भी लग रहा है। अब डी क्यों नहीं होगा वो आप दोबारा सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा डी क्यों नहीं होगा। Especially in jobs where you're not sitting all day looking at a screen, a big plus for many people. Salaries can sometimes be good too, although there's a lot of variety here. And you may have the opportunity in some types of jobs to travel overseas, although that obviously depends on the job. And that obviously depend on job, मतलब वो एग्रीकल्चर और इस सेक्टर में नहीं, ठीक है ना। तो आई गो विद ए एंड सी। लेकिन मैंने पता है कौन सी टेक्निक अप्लाई की? मैंने सिर्फ आंखें बंद करके सुना। चलो आंखें बंद करो, प्लीज आंखें बंद कीजिए। नहीं करेंगे? मैं कर देता हूं आपकी आंखें बंद। ये लीजिए, आपकी आंखें बंद हो गई। क्या मतलब सर? ये लीजिए ना, अभी बंद कर दे आपकी आंखें। अब सिर्फ सुनने पर तवज्जो देना, टेक्निक फॉलो करो।
which of the two are likely to be disadvantaged? And likely to का मतलब क्या होता है? मुमकिना disadvantage for people working outdoors. सुनना आप सिर्फ. Not everyone is keen to do it. Of course, working outdoors does have its challenges. It's fine in summer, but can be extremely unpleasant when it's cold and windy. You may need to be pretty fit for some jobs, though with modern technology, that's not as important as it once was. And standards of health and safety are much higher now than they used to be, so there are fewer work-related accidents. But if you like a lively city environment surrounded by lots of people, these jobs are probably not for you. They're often in pretty remote areas. And some people worry about finding a suitable place to live, but in our experience, this usually turns out fine. Before एक दफा दोबारा सुनो. Working outdoors does have its challenges. It's fine in summer, but can be extremely unpleasant when it's cold and windy. You may need to be pretty fit for some jobs, though with modern technology, that's not as important as it once was. And standards of health and safety are much higher now than they used to be, so there are fewer work-related accidents. But if you like a lively city environment surrounded by lots of people, these jobs are probably not for you. They're often in pretty remote areas. And some people worry about finding a suitable place to live, but in our experience, this usually turns out fine. Yes. अब आप देखिए, जो आपने अब आपने बातों को फोकस किया, मैंने आपको देखने नहीं दिया. आपको कौन सा जवाब लग रहा है मुझे चैट में लिखकर भेजें. और बहुत आसानी से आपको लग रहा है कि सर मैं इसके साथ जाऊंगी, 13 और 14 का जवाब लिखकर भेजूंगा. कि सर मुझे एक ऑप्शन तो मैं कंफर्म हो गया है, एक ऑप्शन जो आपको 100% कंफर्म है वो बता दीजिए. जो 100% आपको कंफर्म हो रहा है, 100% जिस पर आपको, जब आपने विंडी और उसका कोल्ड वेदर का सुना तो इसका मतलब है, देखिए आपने सुनने पर सिर्फ फोकस किया, दैट्स एक्चुअली अ डिफिकल्ट वेदर कंडीशंस. तो ये डिफिकल्ट वेदर कंडीशन तो इसने बोला भी नहीं था, लेकिन क्योंकि हमने सुना कि विंडी होगा, कोल्ड होगा, अनप्लेजेंट होगा, तो हमने उसकी बात पे यकीन कर लिया. हाँ भाई. अच्छा, दूसरा, उसने आखिर में एक बात बोली कि ये रिमोट एरियाज में होंगे, दैट्स मे नॉट बी सुटेबल फॉर यू. रिमोट एरियाज, दोबारा सुनना. Work-related accidents. But if you like a lively city environment surrounded by lots of people, these jobs are probably not for you. देखो, इसने probably का जो वर्ड इस्तेमाल किया ना, these are not probably for you, so कहता है following are likely to be disadvantages for people. क्यों? Often in pretty remote areas. Being in a very quiet location, इसका मतलब क्या होता है कि रिमोट एरियाज, दूर दराज किसी इलाके में होते हैं. तो ये आपके लिए एक डिसएडवांटेज फॉर पीपल वर्किंग आउटडोर्स. सो दैट्स बी और सी. ये जो मेरी टेक्निक है, इसको ट्राई करना. जब भी तुम पार्ट 2 की प्रैक्टिस करो, तुम सिर्फ स्टेटमेंट को पढ़ो, ABCDE को मत देखो, तुम जवाब पर पहुंचोगे. देख लेना. ठीक है, चलो आगे. And some people worry about finding a suitable place to live, but in our experience, this usually turns out fine. Before you hear the rest of the talk, you have some time to look at questions 15 to 20. अच्छा, मैं यहाँ पर भी अभी भी मैंने आपसे कहा ना, मैं नोट टेकिंग वाली टेक्निक को ही फॉलो करूंगा, क्योंकि अब जो वो वर्ड्स बोलेगा, अगर मैं ऊपर नीचे होता रहूंगा तो दैट्स गोना बी अ बिट डिफिकल्ट फॉर मी. और अभी आप खुद मुझे देखकर बताइएगा क्या वो ये वर्ड्स बोल रहा है या नहीं बोल रहा. ठीक है ना? अभी आप खुद सुने और फिर मुझे बताइए कि फ्रेश गुड फूड कमर्शियल मैनेजर, क्या वो आसानी से बोल देगा नॉट अ परमानेंट जॉब? तो ये सबके सिनोनिम्स बोलेगा.
तो आप अपने पास नोट टेकिंग करते रहे वो क्या कह रहा है फ्रेश फूड कमर्शियल मैनेजर। और अगर आपके पास टाइम बचता है, अगर है आपके पास, तो फिर आप पढ़ लीजिए। नॉट अ परमानेंट जॉब इन्वॉल्व्स leading a team, experience not essential, intensive work but also fun, chance to earn more through overtime, chance for rapid promotion, accommodation available, local travel involved। चले शुरू करें। Now listen and answer questions 15 to 20. Now, let me tell you about some of the exciting jobs that we have on our books right now. One is for a fresh food commercial manager. Our client here is a very large fresh food producer, supplying a range of top supermarkets. They operate in a very fast-paced environment with low profit margins. The staff there work hard, but they play hard as well. So if you've a sociable personality, this may be for you. किसके साथ जा रहे हैं? वेरी गुड, दोबारा सुने। They operate in a very fast-paced environment with low profit margins. The staff there work hard, but they play hard as well. So if you've a sociable personality, this may be for you. Intensive work, work hard. Intensive work hard, social but also fun. We have an exciting post as an agronomist, advising farmers on issues such as crop nutrition, protection against pests, and the latest legislation on farming and agricultural practices. There are good opportunities for the right person to quickly make their way up the career ladder, but a deep knowledge of the agricultural sector is expected of applicants. Yes. Career. Pests, and the latest legislation on farming and agricultural practices. There are good opportunities for the right person to quickly make their way up the career ladder, but Quick. Quick का वर्ड किससे? Career. Quick. Rapid promotion. Chance for rapid promotion. मैंने आपसे कहा ना, यहाँ जो वर्ड लिखे वो नहीं बोलेगा। आप जो वर्ड बोल रही हो उसके वर्ड्स को पकड़ो और उसका सिनोनिम निकालो। a deep knowledge of the agricultural sector is expected of applicants. A leading supermarket is looking for a fresh produce buyer who is available for a 12-month maternity cover contract. 12 months contract. अब अगर 12 months contract है तो बता दो ये क्या है? It's not a permanent job. लोग कहते हैं हमें पार्ट 2 में मसले हो रहे हैं, तो बेटा वो पार्ट 2 में वो अल्फाज नहीं बोल रहा जो इंफॉर्मेशन में लिखा हुआ है। वो जो बोल रहा है उसका ऑपोजिट, उसका सिमिलर वर्ड तुम्हें ढूंढना है, उससे मैच करना है। 12 months जॉब, इसका मतलब है इट्स नॉट अ परमानेंट जॉब। You need to have experience in administration, planning and buying in the fresh produce industry, and in return will receive a very competitive salary. We have also received a request for a sales manager for a chain of garden centres. You will be visiting centres in the region to ensure their high levels of customer service are maintained. This post is only suitable for someone who is prepared to live in the region. There is also a vacancy for a tree technician to carry out tree cutting,
forestry and conservation to juggle work with farm duties, including crop sowing and harvesting, machine maintenance, and animal care. Might be prepared to consider someone who has just completed an appropriate training course. Forestry and conservation work to request for a sales manager for a chain of garden centres. You will be visiting centres in the region to ensure their high levels of customer service are maintained. This post is only suitable for someone who is prepared to live in the region. देखो मैंने आपको एक वर्ड याद करवाया है रीजन का वर्ड मैंने तुम्हें याद करवाया है जो रीजन और डिस्ट्रिक्ट का वर्ड होता है वो किससे मैच होता है मेरे रीडिंग के लेक्चर्स बहुत मैच होते हैं यहाँ पर जो वर्ड्स मैंने रीडिंग में मैच करता हूँ यहाँ पर भी मैच हो रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है गार्डन सेंटर सेल्स मैनेजर और जब वो बोल रही है तो बार बार वो रीजन का वर्ड इस्तेमाल कर रही है बताओ रीजन का वर्ड किससे मैच होगा रीजन का वर्ड लोकल से मैच होता है रीजन का वर्ड एरिया से मैच होता है रीजन एरिया लोकल अब जरा दोबारा सुनो In return, will receive a very competitive salary. We have also received a request for a sales manager for a chain of garden centres. You will be visiting centres in the region to ensure their high levels of customer service are maintained. This post is only suitable for someone who is prepared to live in the region. Local travel involved. मतलब you will be visiting. It means local traveled. You will be visiting in the region. So that's local travel involved. There is also a vacancy for a tree technician to carry out tree cutting, forestry and conservation work. Candidates must have a clean driving licence and have training in safety procedures. A year's experience would be preferred, but the company might be prepared to consider someone who has just completed an appropriate training course. Finally, who has just completed a training course? We have a position for a farm worker. Yes. Who has just completed a training course? कोई experience नहीं भी है तो चलेगा. Experience not essential. आगे चलिए. This will involve a wide range of farm duties, including crop sowing and harvesting, machine maintenance, and animal care. Perks of the job include the possibility of renting a small cottage on the estate and a chance to earn a competitive salary. आपको competitive salary मिल रही है, आपको rent मिल रहा है, accommodation मिल रही है यानी क्या मिल रही है आपको रहने कॉटेज मिल रहा है तो जब कॉटेज मिल रहा है तो वो कॉटेज क्या है एकोमोडेशन अवेलेबल आपने देखा कि इस पार्ट के अंदर आपके जो वर्ड्स हैं वो नहीं बोले जाते आपको बार बार यही बात समझाई जा रही है कि जो 15 to 20 वो बोल रहा है उसको गौर से सुनकर जो ऊपर वर्ड्स लिखे उसका सिनोनिम और ऑपोजिट्स निकाल लें ठीक है आइए एक और ट्राई करते हैं ये हम कर चुके हैं काफी मरतबा किया है याद होगा ये तो इसके वो करते हैं एमसीक्यूज कर लेते हैं And a recreation facility. And answer questions 11 to 14. Right, next on the agenda we have traffic and highways. Councillor Thornton. Thank you. Well, we now have the results of the survey carried out last month about traffic and road transport in the town. People were generally satisfied with the state of the roads. There were one or two complaints about potholes, which will be addressed, but a significant number of people complained about the increasing number of heavy vehicles using our local roads to avoid traffic elsewhere.
जो मेन कंसर्न था वो क्या था कि हैवी व्हीकल जो है वो इस सड़क का इस्तेमाल कर रही है। अब ये जो हैवी व्हीकल्स है ये बेसिकली क्या चीज है बताओ? ये जो हैवी व्हीकल्स है ये क्या चीज है? दीज आर द टाइप ऑफ ट्रैफिक। तो असल अब दोबारा सुना। There were one or two complaints about potholes, which will be addressed, but a significant number of people complained about the increasing number of heavy vehicles using our local roads to avoid traffic elsewhere. ठीक है बेटा, इंक्रीजिंग ज्यादातर जो कंप्लेंट्स थी इंक्रीजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रैफिक, जैसे हैवी ट्रैफिक का उसने कहा, इट मींस चेंजेस इन द टाइप ऑफ ट्रैफिक। We'd expected more complaints by commuters about the reduction in the train service, but it doesn't seem to have affected people too much. The cycle path that runs alongside the river is very well used by both cyclists and pedestrians since the surface was improved last year, but overtaking can be a problem, so we're going to add a bit on the side to make it wider. वो फिर कहती है कि ओवरटेकिंग इज अ प्रॉब्लम, तो हम इसको थोड़ा सा लंबा कर रहे हैं, उसकी सड़क दोबारा बना रहे हैं। भाई ओवरटेकिंग में मसला आ रहा है तो वो क्या कर रहे हैं, उसको वाइडर कर रहे हैं, इट विल बी वाइडेंड। ठीक है। At some stage, we'd like to extend the path so that it goes all the way through the town, but that won't be happening in the immediate future. The plans to have a pedestrian crossing next to the post office have unfortunately had to be put on hold for the time being. We budgeted for this to be done this financial year, but then there were rumours that the post office was going to move, which would have meant there wasn't really a need for a crossing. Now they've confirmed that they're staying where they are, but the Highways Department have told us that it would be dangerous to have a pedestrian crossing where we'd originally planned it, as there's a bend in the road there. So, yes. वो क्या कह रहे हैं कि अभी उन्होंने पोस्टपोन कर दिया, क्योंकि अभी उन्होंने अथॉरिटी ने बताया है कि वो वहां देयर इज अ बेंड इन द कॉर्नर, और फिर जो है वो क्या होगा, डेंजरस हो जाएगा। जब डेंजरस हो जाएगा तो उसको आप दूसरे अल्फाजों में क्या कहेंगे कि वो क्या होगा, अनसेफ होगा। आप देख रहे हैं पार्ट 2 के अंदर बेटा वो अल्फाज आपको बोलता ही नहीं है जो लिखे हुए हैं, आपको सिर्फ सुनना है और अपने कानों पर भरोसा रखना है और इस स्टेटमेंट को पढ़ना है। अब कहते हैं ऑन स्टेशन रोड नोटिसेस हैव बीन इरेक्टेड। क्यों भाई? that'll need some more thought. On Station Road, near the station and level crossing, drivers can face quite long waits if the level crossing's closed, and we've now got signs up requesting them not to leave their engines running at that time. This means pedestrians waiting on the pavement to cross the railway line don't have to breathe in car fumes. Yes. अब on station road notices have been erected, क्या? Telling cyclists not to leave their bikes, कि अपनी बाइक छोड़ के पान खाने मत जाए। वार्निंग pedestrian to leave enough time when crossing the railway, या फिर उनसे ये कहा जा रहा है कि भाई अपने इंजन बंद कर दे ताकि जो वहां लोग खड़े हुए हैं वो सही से सांस ले सकें while waiting at the level crossing। ठीक है, तो योर आंसर गोज विद बी। मैप आप हम लोगों ने लास्ट टाइम में ख्याल से किया था ये वाला, और इंशाल्लाह कल अब सेक्शन 3 को करते हैं। मैंने आप लोगों को पार्ट 1 और पार्ट 2 भेजा हुआ है। अपनी वीक वाइज तैयारी आप लोग लाजमी स्टार्ट करें। जो प्लान मैंने आपको 28 डेज का दिया है उसके मुताबिक पार्ट 1 और पार्ट 2 की प्रैक्टिस डेली बेसिस पे करें। बेटा अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे देन यू विल नॉट इम्प्रूव योर स्कोर। आपको 30 मिनट सेल्फ प्रैक्टिस लाजमी करनी है एवरी डे। ठीक है ना? पार्ट 1 अगर हो गया आपका 7 डेज में तो पार्ट 2 शुरू कर दें, फिर पार्ट 3 पर आए, फिर पार्ट 4। और अभी तक अगर आपने प्रैक्टिस नहीं शुरू की है तो बेटा
आप लाजमी तौर पर प्रैक्टिस शुरू कर दें। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह सी यू टुमारो। इट्स टाइम टू लव यू एंड लीव यू। अस्सलाम वालेकुम।